Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to part 3 of video lectures on monoclonal antibodies. In previous video, we had discussed the production of murine and chimeric monoclonal antibodies. In this lecture, we will continue our discussion on production of monoclonal antibodies with respect to humanized and fully human antibodies. And we will also learn the naming mechanism of these antibodies. So let us begin with the humanized monoclonal antibodies. The next iteration designed to reduce murine sequence content was the creation of humanized antibodies. Humanized monoclonal antibodies typically retain only the hypervariable regions or complementary determining regions of a murine antibody, while the remainder of the antibody is human. Thus, humanized antibodies typically contain only 5% to 10% murine composition. The preparation of humanized antibodies follows a path similar to the synthesis of chimeric antibodies. Humanized antibodies generally have less adverse human immunological responses than murine or chimeric monoclonal antibodies. Humanized monoclonal antibodies typically are synthesized by grafting murine CDRs to a human antibody. Using recombinant DNA technology, human immunoglobulin light and heavy chain genes can be amplified by polymerase chain reaction, thus resulting human lymphoid cDNA library that can be used as a template for in vitro synthesis of the entire antibody except for the CDRs. Murine CDRs are cloned and grown in parallel. The respective genes can then be spliced into vector DNA and incorporated into bacteria for growth. To streamline the process, often both human cDNA and murine cDNA containing vectors can be incorporated into the same bacterial cell using co-transfection, and an intact humanized monoclonal antibody can be produced. As with the chimeric antibodies, humanized antibodies must be extracted from bacterial cultures and purified. Humanized monoclonal antibodies रिटेन करती हैं सिर्फ हाइपर वेरिएबल रीजन्स को, या फिर जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स कहते हैं. म्यूरिन एंटीबॉडी का सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन रिटेन होता है ह्यूमनाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में, जबकि बाकी तमाम पार्ट ह्यूमन होता है. जैसे आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, ये जो ब्लैक पार्ट है जो हाइपर वेरिएबल रीजन है, CDR रीजन है, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन, सिर्फ ये म्यूरिन एनालॉग है. बाकी तमाम के तमाम पार्ट ह्यूमन प्रोटीन कॉम्पोनेंट है. ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज टिपिकली 5 या 10% म्यूरिन कॉम्पोजिशन रखती हैं. रिमेनिंग कॉम्पोजिशन ह्यूमन कॉम्पोजिशन होती है. ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज़ की प्रिपरेशन भी सिमिलर मेथड फॉलो करती है जिस तरह से हमने chimeric एंटीबॉडीज़ की प्रिपरेशन पढ़ी थी. ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज़ में जनरली लेस एडवर्स ह्यूमन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं म्यूरिन या chimeric मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के साथ. ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय ग्राफ्टिंग म्यूरिन CDRs या म्यूरिन के जो CDR या कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन्स हैं टू अ ह्यूमन एंटीबॉडी. यानी ह्यूमन एंटीबॉडी के रीजन के ऊपर अगर म्यूरिन के CDRs ग्राफ कर दें तो हम ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज कर सकते हैं. रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इस मकसद के लिए. ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन के लाइट और हेवी चेन जीन्स को एम्पलीफाई करते हैं बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी.
जो रिजल्टिंग कंपोनेंट है वो ह्यूमन लिम्फोइड है, ये CDMA लाइब्रेरी है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट फॉर इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ द एंटायर एंटीबॉडीज एक्सेप्ट फॉर द CDR। जो CDR रीजन है, म्यूरिन का CDR रीजन है, दे आर क्लोन्ड इन पैरेलल और दे आर ग्रोन इन पैरेलल। जब दोनों रीजन्स मल्टीप्लाई और ग्रो हो जाते हैं तो रिस्पेक्टिव जीन्स को स्प्लिस करते हैं इनटू अ वेक्टर DNA एंड देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ बैक्टीरिया फॉर ग्रोथ। इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मोस्टली ह्यूमन CDMA और म्यूरिन CDMA दोनों कंटेनिंग वेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू अ सेम बैक्टीरियल सेल को ट्रांसक्रिप्शन से, और एक इंटैक्ट ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि प्राइमरिक एंटीबॉडीज़ में था, ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज़ को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है बैक्टीरियल कल्चर से और उन्हें प्योरीफाई किया जाता है बिफोर एप्लीकेशन। One problem sometimes encountered with both chimeric and humanized monoclonal antibodies is the retention of the combining region conformational integrity. A single amino acid residue not related to antigen binding in the FC or variable region C-terminal area causes the otherwise ideal CDR complementary determining region to be slightly altered in its three-dimensional conformation. Altering the alignment of a selected CDR residue by even a few degrees can drastically change the antibody's binding affinity and avidity, lowering the binding efficiency of the chimeric or humanized antibody. Minor alterations in the framework residue of CDMA are needed to restore or improve the murine antibody epitope binding. The synthesis process of expressing humanized antibodies may also lead to improper or non-existent glycosylation. Glycosylation of the FC is important in solubility, serum clearance and general pharmacokinetic of antibodies. Humanized antibodies are less likely to elicit an immune response than murine or chimeric monoclonal antibodies. The improvement of humanized over both murine and chimeric antibodies has been enthusiastically accepted. The ideal goal is to use pure human antibodies for antibody application, especially those used in vivo procedures. एक जो प्रॉब्लम अराइज होती है, ये इनकाउंटर होती है chimeric और ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के साथ, वो है रिटेंशन ऑफ द कंबाइनिंग रीजन कन्फर्मेशन इंटीग्रिटी। सिंगल अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जो कि रिलेटेड नहीं होते एंटीजन बाइंडिंग साइट से FC रीजन में या फिर वेरिएबल रीजन में C-टर्मिनल एरिया के ऊपर, वो कॉज करते हैं एक आइडियल CDR को या एक स्लाइटली ऑल्टर्ड CDR को, जो कि 3-dimensional कन्फर्मेशन में ऑल्ट्रेशन लेकर आता है। अलाइनमेंट सेलेक्टेड CDR रेजिड्यूज की अगर सिर्फ फ्यू डिग्रीज तक ही ऑल्टर हो जाए तो वो ड्रास्टिकली चेंज कर देती है एंटीबॉडी की बाइंडिंग एफिनिटी को और एविडिटी को। इस चेंजिंग की वजह से बाइंडिंग एफिशिएंसी लोअर हो जाती है काइमेरिक और ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी की। इसी वजह से माइनर ऑल्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है जब CDMA का फ्रेमवर्क फॉर्म किया जा रहा होता है, कॉपी DNA फॉर्म किया जा रहा होता है, ताकि रिस्टोरेशन में इम्प्रूवमेंट की जा सके म्यूरिन की एंटीबॉडी एपिटोप बाइंडिंग साइट पर। सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज़ की एक्सप्रेशन इम्प्रॉपर या नॉन एग्जिस्टेंट ग्लाइकोसाइलेशन की तरफ लीड करती है। ग्लाइकोसाइलेशन अगर FC रीजन के अंदर इम्प्रॉपर है तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो ऑल्टर कर सकता है सॉल्युबिलिटी को
एंटीबॉडी की सीरम क्लियरेंस को और जनरल फार्माकोकाइनेटिक्स को। ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज़ लेस लाइकली हैं कि ये कोई इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट करेंगी जिस तरह से म्यूरिन या काइमेरिक एंटीबॉडीज़ करती हैं। ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट है एज़ कम्पेयर टू म्यूरिन एंड काइमेरिक एंटीबॉडीज़, और ये वाइडली एक्सेप्टेड है। जो मेन आइडियल गोल है वो प्योर ह्यूमन एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस है और एंटीबॉडी एप्लीकेशन, स्पेशली जहाँ पर इन विवो प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड हैं। There are certain applications or certain examples of humanized antibodies. The first one is palivizumab Synagis. It is used for the prevention of respiratory syncytial virus infections in infants. The second example of trastuzumab, which is available with the name of Herceptin. It is used for the treatment of HER2 positive metastatic breast cancer. And the third example is alemtuzumab, which is available with the name of Campath. It is used for the treatment of chronic lymphocytic leukemia, cutaneous T-cell lymphoma and T-cell lymphoma. So 3 applications हैं, ये 3 examples हैं humanized antibodies की यहाँ पर given, although there are many others. First one is palivizumab, जो Synagis के नाम से आती है, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस की प्रिवेंशन के लिए यूज़ होती है इन्फेंट्स में। ट्रांसट्यूज़ुमैब हर्सेप्टिन के नाम से आती है, HER2 पॉजिटिव मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। एलेम्ट्यूज़ुमैब कैम्पथ के नाम से आती है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट में, क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा की ट्रीटमेंट में और टी सेल लिम्फोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। So the last antibodies are called as human antibodies. Falsely they are called as human monoclonal antibodies. Human monoclonal antibodies are fully or nearly 100% human in composition. The word monoclonal is technically not applicable to all synthetic human antibodies because some of the synthesis technologies do not employ hybridoma technology. There are 2 basic technologies employed to produce human antibodies. Number 1 is genetically engineered knockout or transgenic mice, and number 2 is the use of phage display libraries. Human monoclonal antibodies fully या nearly 100% human in composition होती हैं। monoclonal का वर्ड टेक्निकली एप्लीकेबल नहीं है सिंथेटिक ह्यूमन एंटीबॉडीज़ में, क्योंकि प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज़ में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही होती। 2 बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको एम्प्लॉय किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ह्यूमन एंटीबॉडीज़। पहली जेनेटिकली इंजीनियर्ड नॉकआउट या ट्रांसजेनिक माइस है और दूसरी यूज ऑफ फेज डिस्प्ले लाइब्रेरीज है। सो लेट्स डिस्कस द नॉकआउट और ट्रांसजेनिक माइस। Knockout mice are developed by harvesting embryonic stem cells from early stage fertilized mouse embryos. An existing gene is inactivated or knocked out by replacing it with an artificial piece of DNA. The altered stem cells are then grown into mice with an altered genomic profile. Inactivation of the ability to rearrange germline, heavy and light chain configurations enables the mouse ability to make murine immunoglobulin and the corresponding murine B cells. Substituting human heavy and light chain germline DNA can cause the knockout mouse to produce human B cells which may produce human monoclonal antibodies. While technically challenging, the use of knockout mice to produce anti-human monoclonal antibodies is an emerging and promising technology. Human monoclonal antibodies engineered from transgenic mice strains have been reported to have affinity values toward antigens similar to human antibodies, display pharmacokinetic equivalent to human antibodies, and possesses virtually non-existent hypersensitivity responses compared to
murine, chimeric, and humanized monoclonal antibodies. As the technology for creating human monoclonal antibodies advances, approved diagnostic and therapeutic products will undoubtedly emerge. नॉकआउट माउस या माइस डेवलप किए जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के दौरान अर्ली स्टेज फर्टिलाइज माउस एम्ब्रियोज में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को हार्वेस्ट किया जाता है. इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग जीन है उसे इनएक्टिवेट कर दिया जाता है जिसे हम नॉकआउट कहते हैं और उस एग्जिस्टिंग जीन को एक आर्टिफिशियल पीस ऑफ डीएनए के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है. जो ऑल्टर्ड स्टेम सेल है उसको फिर ग्रो करवाया जाता है इनटू माइस जिसकी एक ऑल्टर्ड जीनोमिक प्रोफाइल है. इनएक्टिवेशन एबिलिटी की इनएक्टिवेशन के जर्मलाइन हैवी एंड लाइट चेन की रीअरेंजमेंट नॉकआउट माइस में एक्चुअली माइस की एबिलिटी को इनहिबिट करती है कि अपनी या इम्यूनोग्लोबुलिन म्यूरिन इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसाइज करे या फिर कॉरस्पॉन्डिंग बी सेल्स बनाए. जो सब्सटीट्यूटेड हैवी और लाइट चेन है जर्मलाइन डीएनए में वो नॉकआउट माउस के अंदर ह्यूमन बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं. टेक्निकली चैलेंजिंग एस्पेक्ट है यूज़ ऑफ नॉकआउट माउस इंटायरली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ फॉर्म करने के अंदर इमर्जिंग और प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है. ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को इंजीनियर किया जाता है फ्रॉम ट्रांसजेनिक माइस स्ट्रेन्स और इनकी 3 मेजर इफेक्टिव वैल्यूज़ हैं कि ये एफिनिटी वैल्यूज़ टूवर्ड्स एंटीजन बिल्कुल सिमिलर देती हैं जिस तरह से ह्यूमन एंटीबॉडीज़ देती हैं. फार्माकोकाइनेटिक इक्विवेलेंस होता है टू ह्यूमन एंटीबॉडीज़ और ये वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है हाइपरसेंसिटिविटी रिस्पॉन्सेस के लिए अगर हम इसे कंपेयर करें म्यूरिन, चिमैरिक या ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट. तो टेक्नोलॉजी ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए एडवांस अप्रूव और डायग्नोस्टिक या थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स फॉर्म करने में अनडाउटेडली इमर्ज हो रही है. Second type of technique that is used to make human antibodies are phage display libraries. Bacteriophages or phages are viruses that infect bacteria. Typical phages have hollow heads where phage DNA or RNA is stored as well as tails which bind to specific molecule on the surface of the target bacteria. Their viral DNA is then injected through the tail into the host cell, causing the rapid production of identical progeny phages. Eventually, the new phages burst from the cell to and infect more bacteria. Simplistically, specific antibody fragments are displayed by fusion into phage DNA structure. The phage display is rapidly reproduced using E. coli generating a large population or library of antibody fragment specific for the target antigen. Each resulting phage has a functional antibody protein on its surface and contains the gene encoding the antibody incorporated into the phage genome. Recent advances using antibody phage display now make it possible to generate human monoclonal antibodies that recognize any desired antigen. बैक्टीरियोफेजेस या फेजेस वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. टिपिकल फेजेस के अंदर हॉलो हेड्स होते हैं जहाँ पर फेज डीएनए या आरएनए स्टोर होता है. इसके अलावा फेजेस के पास टेल्स होती हैं जो एक्चुअली बाइंड कर सकती हैं स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ ऑन द सरफेस ऑफ द टारगेट बैक्टीरिया. वायरल डीएनए इंजेक्ट होता है टारगेट बैक्टीरिया के अंदर थ्रू देयर टेल इनटू द होस्ट सेल जो कॉज करता है रैपिड प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिटी प्रोगेनी फेजेस में. इवेंचुअली नए फेजेस बनते हैं, बर्स्ट होते हैं सेल से और इन्फेक्ट करते हैं अदर बैक्टीरियाज को. स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रेगमेंट डिस्प्ले होते हैं बाय फ्यूजन इनटू फेज डीएनए स्ट्रक्चर. फेज डिस्प्ले rapidly reproduce होता है using E. coli which generate a large population or library of antibody fragments specific for the target antigen.
एक रिजल्टिंग फेज के पास फंक्शनल एंटीबॉडी प्रोटीन होती है ऑन इट सरफेस and it contains a gene encoding the antibody incorporated into the phage gene. Recent advances एंटीबॉडी फेज डिस्प्ले में ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करती हैं कि ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को जनरेट किया जा सके जो रिकग्नाइज कर सकें डिज़ायर्ड एंटीजन को. Examples of human monoclonal antibodies या human antibodies may include adalimumab, the common marketed name is Humira, was derived from phage display and was the first fully human monoclonal antibody drug to receive FDA approval in 2002. It is used to treat severe conditions including rheumatoid and psoriatic arthritis, Crohn's disease, and ulcerative colitis. The second example is panitumumab. It is used for the treatment of EGFR expressing metastatic colorectal cancer. The third example is golimumab, which blocks TNF alpha and it is used for the treatment of rheumatoid arthritis. And the fourth example is canakinumab, which blocks interleukin-1 alpha, which is used for the treatment of cytokine-associated periodic syndrome. And the fifth example is ustekinumab, which blocks interleukin-1 to 12 and 23, and it is used for the treatment for plaque psoriasis. So this was all about the production of monoclonal antibodies. Now comes the point that how antibodies are actually made. Because of the growing prominence of monoclonal antibodies in medicine, the United States adopted name USAN Council has approved guidelines for the nomenclature. In 2011, the USAN Council updated the original guidelines, and the nomenclature that is used or follows nowadays includes a prefix followed by a target, followed by a source species, and followed by a suffix. A prefix is a unique prefix used to identify the product. Target is usually a 3-letter identifier for the disease or target. Source species, 1 or 2 letter identifier for animal source, and suffix for monoclonal antibodies is constant, which is MAB. Nomenclature में USAN और यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम्स काउंसिल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करती है. जो मेन नोमेनक्लेचर है वो इन 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. इनिशियली प्रीफिक्स, उसके बाद टारगेट, उसके बाद सोर्स स्पीशीज़ और उसके बाद सफिक्स. अब इसमें प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स एक यूनिक प्रीफिक्स है जो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है. टारगेट यूजुअली 3-लेटर आइडेंटिफायर होता है जो डिजीज़ को या फिर उस टारगेट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है जहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाकर एक्ट करेगी. सोर्स स्पीशीज़ 1 या 2 लेटर आइडेंटिफायर होता है जिस सोर्स से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अटेन की गई है. और सफिक्स वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए कांस्टेंट है मैम, यानी हर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड हो रही होगी मैप के ऊपर. Let's see example. For example, the product rituximab was the first chimeric monoclonal antibody approved in the United States for the treatment of malignancy. The name can be translated as RI is the unique prefix, TU stands for tumor, and XI is used for the chimeric, which is a chimeric source, and MAB is monoclonal antibody. So simply अगर हम इसे देखें तो rituximab chimeric monoclonal antibody है. इसका नेम को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? RI एक यूनिक प्रीफिक्स है जो इसकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी शो कर रहा है. TU क्योंकि ये प्रोडक्ट ट्रीटमेंट ऑफ मेलिग्नेंसी या ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है. TU इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ट्यूमर. 2-लेटर वर्ड है जो एक्चुअली टारगेट को आइडेंटिफाई कर रहा है वेयर दिस प्रोडक्ट इज एक्टिंग. XI इज
a source species. You later identify a chimeric source tail, and MAB is the suffix used for monoclonal antibodies. There is another example. If the antibody is radio labeled, the isotope symbol and mass number are placed before the antibody USAN name, and a separate word is used to identify the conjugate between the radioactive label and the monoclonal antibody. For example, a radiolabeled monoclonal antibody Y90 or Ytrin90 would be Trimumab dioxetan. It can be interpreted as Y90 labeled is an isotype and number. TIB is a unique prefix used to identify the product. TUM is used to identify the target, which is tumor. O is the source species, which is murine. MAP is the suffix used for monoclonal antibodies, and dioxetan is the conjugate which is used for this radioactively labeled monoclonal antibody. अगर कोई भी monoclonal antibody रेडियो लेबल्ड है तो आइसोटाइप इस सिंबल में मास नंबर प्लेस किया जाता है बिफोर द एंटीबॉडी यूएसएन नेम, और जो उसका कॉन्जुगेट है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट मैप नेम ऐड किया जाता है, यानी बिल्कुल लास्ट में ऐड किया जाता है. यहाँ पर एग्जांपल है Ytrin90 एक ग्लूटामाब डाइऑक्सीटाइन. Y90 लेबल्ड आइसोटोप और नंबर है. कुछ भी एक यूनिक प्रीफिक्स है जो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को शो कर रहा है. TUM shows the target which is tumor. O source species murine antibody है, murine source species है. MAB unique suffix है for monoclonal antibody, and dioxetan is the conjugate to which this is attached. There is a table or nomenclature for naming monoclonal antibody products. This can be used to name different monoclonal antibodies. For example, there are different targets, constant targets, which are used for the treatment options like tumors, immunomodulators, bacterial, cardiovascular targets, antifungal targets, interleukins, neurons as targets, bone, viruses, or antiviral targets. Each of these 1 to 2 letter words would be used for these targets. And there are source species: rat, rat mouse, chimeric, hamster, humanized, mouse, chimeric humanized, fully humanized, or human. You can use these 1 to 2 letter signifiers in order to name a particular monoclonal antibody. So let's call it a day. In the current wave of COVID-19, FDA has given an emergency approval to a MAB. Bamlanivimab is a monoclonal antibody that is specifically directed against the spike proteins of SARS-CoV-2, and it is designed to block the virus attachment and entry into human cells. Thank you for watching this video. Take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.